Alright guys, so am I audible? How is the audio visual? Guys, how is the audio visual? Alright guys, so am I audible? Alright, so hi friends, this is Dr. Kashish and I welcome you to this predictor series. So I will be covering important topics for your exam, and the first here is this topic is related to test of significance. This topic is related to test of significance. So guys, the question is, in a clinical trial investigating efficacy of a new drug lowering blood pressure, which statistical test would be the most appropriate comparing mean blood pressure before and after treatment? So this is the question where we need to tell the most appropriate test comparing mean blood pressure before and after treatment. So guys, I want to tell you here the topic test of significance. So the test of significance, they are of two types: paired, unpaired. Paired and unpaired. The paired test is okay. So the paired and unpaired, these are the type of parametric test. So what are parametric tests? Those tests where we have the data is quantitative. So where the data is quantitative, right? In this question we have mean blood pressure. Mean blood pressure means the data is quantitative, right? So either it is paired t-test or unpaired t-test. Next thing, how we do these kind of questions. Next thing we check before and after. Next is before and after. Guys, before and after, if I talk about before and after, so before and after means we are doing on the same group, right? So unpaired we use when we have one group, and when we have two groups we use unpaired. We use unpaired t-test. So when we have one group it is paired t-test. When we have two groups it is unpaired t-test. Now guys, one more point I want to tell you. What if there are three groups? So paired t-test is used, unpaired for two. Whenever we have more than two groups, we use ANOVA. The test we use is ANOVA. Right? So this is about parametric test. So guys, according to you, what is the correct answer here? It is paired t-test. It is paired t-test. Bachcho, in my subject for your exam, there are few topics which are quite bread and butter for the examiner. बहुत important है. Examiner के लिए वो बहुत important है. And this topic is one of them. Right? This topic is one of them. Next, a researcher divides the population into subgroups. Similarly, I am coming to the second topic, sampling. बच्चों क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, सैम्पलिंग. A researcher divides the population into subgroups based on certain characteristics and then select a random sample from each subgroup. Which sampling method is this? What about you? Any answer here? Anyone who wants to give answer here? Yes guys, are you there? Anyone who wants to give answer to this topic?
Very good. Nikesh and there is another student, they are talking about stratified sampling. But if I talk about sampling method, we have probability sampling, non-probability sampling. Probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling, number 1 is simple random, number 2 stratified random, number 3 सिस्टमैटिक रैंडम. बच्चों हमने डिटेल में, ये हमारी रेगुलर क्लास में हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक कीवर्ड बताता हूँ जो उसको देख के आप पहचान लोगे, है ना. सिस्टमैटिक अगर ऐसे लिखा हो, एवरी 10th और सेकेंड, एवरी हर दूसरा घर, हर दूसरा बच्चा, हर 10वां बच्चा, हर 10वां घर, अगर ऐसा कुछ आपके एग्जाम में लिखा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये क्या है? सिस्टमैटिक. स्ट्रैटिफाइड में वी डिवाइड इन ग्रुप्स. स्ट्रैटिफाइड में वी डिवाइड इन ग्रुप्स, राइट. इन स्ट्रैटिफाइड वी डिवाइड इन ग्रुप्स, right. In stratified we divide in groups. Now next is this one. What does a correlation coefficient of 0.9 indicate? So correlation coefficient, when it is more than 1, it is positive correlation. Better when it is more than +1, it is positive correlation. When it is less than 1, it is negative correlation, right. So in this case we have 0.9 minus 0.9. So minus is there, it means it is a weak negative correlation, right. So when minus is there, it is negative correlation. So here we have negative correlation. So we rule out these two options because positive is there. So rule out positive and just focus on the negative word. Here, if the value is near to 1, it is strong. If the value is near to 1, right. So if the value is near to 1, it is strong. So it is 0.9. So it is strong negative correlation. Sir, can you give another example? Yes. What is a weak negative correlation? Minus 0.2 is an example of weak negative correlation. Weak positive plus 0.2. Strong positive plus 0.9. Plus 0.9 is strong positive and weak negative minus 0.9. Now, which of the following is true regarding outlier in a box and whisker plot? So guys, this is a box and whisker plot. So this is a box and whisker plot, right? Now, in this box and whisker plot, this is the minimum value, this is the maximum value, this is the median, this is median. Guys, the outlier means, so this is a normal distribution box and whisker curve. So here this means an outlier. This means an outlier. This means an outlier. Now, if it is on right side, so this is known as right skew. This is known as left skew. Right now,
Outliers are always included within the whiskers. Outliers are represented by dots outside the whisker. Outliers are typically associated within the box. Outliers do not affect. So guys, these whiskers, whenever we have an outlier here, we get a dot here. And whenever we have an outlier here, we get a dot here. So usually the outliers, they are represented by the dots. So here the correct answer is B. Which of the following factors affect the width of confidence interval? बच्चों confidence interval क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में हम कहानी सुनते हैं. What is a confidence interval? बच्चों confidence interval क्या होता है? Suppose I am doing a study here. So this is an area. Here I am doing a study. Right? Now मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया. इस पूरे एरिया में जहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं, मैं स्टडी नहीं कर सकता. मैंने स्टडी किया यहाँ पे. ठीक है. नाउ सो बच्चों, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस केस के अंदर अब मैंने इस पे स्टडी किया और मुझे मिला कि यहाँ प्रेवलेंस ऑफ डेंटल केरीज 20% है. मैंने बोला जाओ, क्योंकि मैंने स्टडी छोटी पॉपुलेशन पे किया ना, 1000 लोगों पे किया. मैंने बोला जाओ तुम जाके देखो. सो यहां पे तुम्हें प्रेवलेंस मिलेगा 18 से 22% के बीच में. मैंने स्टडी कहां की है? यहां. ठीक है, मैंने स्टडी कहां की है? इस छोटे से बॉक्स में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. बच्चों, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है मीन प्लस माइनस z स्टैंडर्ड एरर. मीन प्लस माइनस z स्टैंडर्ड एरर. सो द स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n. सो मीन पे भी डिपेंड करता है, सैंपल साइज n पे भी डिपेंड करता है, एंड z इज द कॉन्फिडेंस लेवल. एंड z इज कॉन्फिडेंस लेवल, इस पे भी डिपेंड करता है. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. राइट. नाउ a researcher wants to determine there is a significant difference in mean cholesterol. Guys, mean is there, so it is going to be paired t-test or unpaired t-test or ANOVA. There are 3 tests for mean, right? So let us rule out this test, and this is among 3 different groups. So whenever we have one group, we use paired. Whenever we have 2 groups, we use unpaired. And whenever we have more than 2, we use ANOVA. So here the correct answer is ANOVA. A researcher conducts a study to evaluate a new screening test for a disease. In a sample of 200 deceased, 180 test positive on screening test. So let us make a 2x2 table. So in a diseased, 200 people are diseased, another 200 is for healthy. Here we write D plus, here we write D minus, and 180 are positive on screening test. Another group of 200 healthy individual, 10 are positive. So here we have 20, and here we have 190. So 180 divided by 200 into 100. So the answer will be 90%.
So the answer here will be 90%. Right? So the answer will be 90%. Now, coming to the next study. A study was conducted to investigate the association between pesticide and Parkinson. Researcher identified 100 individuals with Parkinson's disease and 100 without Parkinson's. Then they gather information on history of pesticide exposure. हाँ जी बच्चों, ये सवाल का आंसर क्या है? Very good beta Nikesh. The correct answer here is this is a case control study. So what we are doing here, this is a group of cases, D plus, controls D minus. We are asking about E plus, E minus, E plus, E minus. So here the correct answer is D. A study aims to examine prevalence of hypertension in a population, its association with age and gender. Which study design is most suitable for this purpose? Which study gives us prevalence? It is the cross-sectional study which gives us prevalence. Cross-sectional study which gives us prevalence. बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं important questions की, important topics की, test of significance, unpaired, paired बहुत important है, sampling methods बहुत important हैं, आपके लिए study designs बहुत important हैं, right? So ये सारी चीज़ें बहुत important है. Which of the following is not an advantage of cohort study design? It allows for the calculation of incidence. This is true because we have to find advantage. We have to find not an advantage of cohort study. It allows for the calculation of incidence rate. Can establish temporal association. This is also true. No recall bias, suitable for studying rare disease. This is not suitable for rare disease. This is not suitable for rare disease. बच्चों मुझे बताओ रिकॉल बायस कौन सी स्टडी में दिखता है? चलो आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं. रिकॉल बायस कौन सी स्टडी में दिखता है? Let me check your knowledge. Recall bias कौन सी स्टडी में दिखता है? Very good, very good. So recall bias is not seen in cohort study. This is correct because this is seen in case control. Because this is seen in case control. The researcher identified a group of individuals who were prescribed to amlodipine 5 years ago, and another group of individuals who were not prescribed. They then review both groups to determine the incidence of cardiovascular disease. This study is a retrospective cohort study. Guys, retrospective cohort study. In retrospective cohort study, we have one group, we have another group. See, बच्चों सुनो, अगर तो मुझे इसको कोहर्ट करना है तो मैं इसको फॉलो करूंगा 20 साल के लिए, इसको भी फॉलो करूंगा, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा. अगर मैं केस कंट्रोल करता हूं तो मेरे पास सिक लोग हैं, इनसे मैं हिस्ट्री लूंगा. हिस्ट्री में अगर पूछूंगा तो ये लोग मुझे हिस्ट्री देंगे. रिकॉल बायस हो सकता है, दोनों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी क्या है?
मेरे पास, मैं आज 2025 में हूँ, मैंने 5 साल पहले 2005 में जो लोग एक्सपोज्ड हुए थे उनको लिया और आज देखा क्या इनको बीमारी हुई है या नहीं हुई। राइट, दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। A researcher is interested in studying the incidence of heart disease among individuals who consume Mediterranean diet. So बच्चों, incidence हमें कौन सी study में मिलता है? In which study design we get incidence? In which study design we get incidence? Very good. So we get cohort. In cohort study we get incidence. So here the correct answer is cohort study. Which study design is best suited for investigation of efficacy of a new vaccine in preventing a particular infectious disease? So the correct answer is randomized controlled trial, because efficacy of new vaccine means experimental study. Experimental study. In a study on association between smoking and lung cancer, researcher collected the following data. Smokers with lung cancer 80. So we will make smokers with lung cancer 80, smokers without lung cancer 120, non-smokers with lung cancer 20, non-smokers without lung cancer 180. We have to find odds ratio. So odds ratio is AD by BC. AD by BC. Let us consider this is A, B, C and D. AD by BC. Right? So A is 80 into 180 divided by 20 into 120. After solving, you will get around 6. Very good बच्चे. Feel the dentistry. Good beta. Very good. Nikesh, Maheshwari, you are also giving very correct answers. Good बच्चे. Neha, Arshia, may I know your name? Feel the dentistry. Right now, feel the community. Right? Feel the study designs. Feel the biostatistics. No? Good bachcho. Very good. Now coming to next. In a study investigating relationship between smoking and heart disease, out of 180 smokers, okay, E plus, E minus, D plus, D minus. Out of 180 smokers, 30 developed disease. Out of 250 known smokers, 10 developed the disease. Find relative risk.
Good बच्चे शिवानी, very good. So what is relative risk? Incidence exposed divided by incidence non-exposed. So 30 by 180 divided by 10 by 250. Right? So it will be 25 by 6. It will be somewhere 25 by 6. Now, but what is the formula for relative risk? Incidence exposed divided by incidence non-exposed. This is also known as risk ratio. If relative risk is more than 1, positive association. If relative risk is less than 1, negative association. If relative risk is equal to 1, no association. No association. Right? Now, okay, open question. This question is to all of you. Let us see who will give the answer first. Right? Let us see who will give the answer first. Now, my first question is, relative risk is 0.9 between green tea and myocardial infarction. Which is correct? Green tea causes MI. Green tea is protective for MI. Which is correct? Very good everyone, very good बच्चों. Because relative risk is less than 1. If relative risk is less than 1, it means the disease is protective. It is protective. Out of 50 patients with new chemotherapeutic agent, 25 developed. I think the font is very okay. I'm sorry, the font is very small. I guess there was some issue at my end in this slide. Anyways, let us read it. Out of 50 patients treated with chemotherapeutic agent, 25 developed dilated cardiomyopathy. So out of 50, 25 developed dilated cardiomyopathy. This is incidence exposed. And out of 50, 5 did not develop. So 25 by 50 divided by 5 by 50. So the answer will be 5. So here the answer will be 5. During a follow-up study, it was found that smokers are 5 times higher risk of developing lung cancer. This is during a follow-up study, it was found smokers are 5 times higher risk of developing lung cancer.
5 times higher. That means relative risk. That means relative risk. 5 times means relative risk. Now risk difference is, guys, risk difference what is risk ratio? Relative risk. What is risk difference? Attributable risk. Attributable risk. Which of the following is correctly matched? So बच्चों, this is very important and प्रिज्मा गाइडलाइंस। बच्चों जब भी हम कुछ करते हैं, जब भी हम कोई भी स्टडी करते हैं, उस स्टडी में हम लोगों को एक चेकलिस्ट देखनी होती है उस पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड। सो प्रिज्मा गाइडलाइंस जो हैं, they are not for RCT but they are for meta analysis. मोनिरुद्या बच्चे, आफ्टर दिस टॉपिक आई विल टेक दिस डाउट। ठीक है बेटा, अभी इसके बाद मैं डाउट लेता हूं। मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू। कंसोर्ट मतलब RCT। कंसोर्ट गाइडलाइंस दे आर फॉर RCT. Care guidelines are for case report. Straub guidelines are for observational studies. This is for observational studies, right? So here the best answer is consort guidelines. Here the best answer is consort guidelines. Now Moniruddha is asking confounding. बच्चे देखते हैं confounding है क्या। So what is confounding? Confounding का मतलब है, सोचो हमने एक स्टडी की और पता लगा alcohol is causing cancer. Alcohol is causing cancer, right? But in reality it is not alcohol, it is the smoking which is causing the cancer. It is not the alcohol. जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं वो बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं, राइट? तो बीमारी अल्कोहल नहीं कर रहा, वो जो कैंसर है वो अल्कोहल से नहीं हो रहा। बहुत लोग हैं वो स्मोक करते हैं अल्कोहल के साथ, तो वो बीमारी कैंसर जो है वो अल्कोहल की वजह से नहीं है, वो स्मोकिंग की वजह से है। पर दुनिया को लगता है कि ये बीमारी अल्कोहल की वजह से। यहाँ पे थर्ड फैक्टर स्मोकिंग है, कंफाउंडिंग फैक्टर, राइट? सो स्मोकिंग हियर इज अ कंफाउंडिंग फैक्टर। नो, नॉट हायर देन मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू से ऊपर कुछ भी नहीं है। दैट इज द मोस्ट अटमोस्ट लेवल ऑफ एविडेंस। दैट इज द अटमोस्ट लेवल ऑफ एविडेंस। ऑलराइट बच्चों, सो वी आर डन विद आवर प्रिडिक्टर सीरीज। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें करे एंड PSM हार्डली 5 to 7 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू। मुझे लगता है मेरे वाले पोर्शन में से बाकी प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री एंड पीडो यू हैव अ सेशन ऑन मंडे, राइट? सो आफ्टर माय सेशन you have another session, right? All right, so thank you so much बच्चों. I wish you all a very amazing good luck for your future. बच्चों आपने बहुत मेहनत की है,
बस लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि बेटा इस समय आप जिस समय हो, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस लाइफ के मोड पे अभी आप हो, कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत डाउट हो रहा होगा अपने ऊपर, यार ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया, या फिर पढ़ा था याद नहीं आ रहा, या फिर क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है बेटा, इस टाइम पे आपका रिजल्ट जो डिपेंड करेगा वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली हम जितना पढ़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका फल हमें मिलता है, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट आपका यहाँ पे कितनी शांति है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रह के पेपर सिर्फ खराब होता है, कुछ नहीं निकल के आता, कुछ भी निकल के नहीं आता। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से, एंजाइटी से, बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचने से। आपके हाथ में तो नहीं है, अगर आपके हाथ में तो नहीं है, आपने जो मेहनत करनी थी कर ली, अब आप उसको रिवाइज करो और अपने पे विश्वास करो। अपने बहुत साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ, शायद बहुत बच्चे एग्री करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे एग्री ना करें। हमने जो मेहनत करनी थी हमने वो मेहनत कर ली। अब वो दिन भी डिपेंड करता है, वो दिन भी डिपेंड करता है। अगर दिमाग शांत होगा तो ऐसी जगह पे आंसर लगेगा, ना चाहते हुए भी ठीक मार्क करके आओगे। और दिमाग अशांत रखोगे, आता होगा फिर भी गलत मार्क करके आओगे। इसीलिए थोड़ा सा अब शांति रखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नहीं आएंगे। हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम बस मेहनत कर सकते हैं, और वो बच्चों आपने करी है ना। बहुत सारे नाम मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, इन बच्चों के कंटिन्यूस डाउट्स आए हैं, वो बच्चे कंटिन्यूस पढ़े हैं, हमारे साथ क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। चलो अब बिफोर आई एंड दिस सेशन, कैन आई सी सम हैप्पी फेसेस? क्या मैं आपके कुछ हैप्पी फेसेस देख सकता हूँ? कैन आई सी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये हमारे बच्चे करेंगे एग्जाम में? क्या थोड़े से आपके हैप्पी फेसेस देख सकता हूं मैं? कैन आई सी सम हैप्पी फेसेस? ऑल राइट, हैप्पी फेसेस मीन्स कैन आई सी सम emojis, smileys in the chat box? Smiley in the chat box means your happy faces. Very good bachcho, very good. So here I end this session. Thank you so much. And after my session, Dr. Nitin sir will be starting.